Okay, Zubair, let's proceed ahead with your technical snap for strength of material, and you're going for Jammu and Kashmir Public Service Commission Assistant Engineer interview. Yes, sir. Zubair, strength of material is a subject in which we talk about strengths of some materials. Can you tell me what is the meaning of material for you? What do you understand by material? Sir, by material, in this subject we mean there are various types of materials, but in this subject we are learning about only engineering materials. So that's what, sir, by materials we mean here in this subject. Can you tell We me are on. Yes, some sir. important engineering material? Yes, sir. Some important engineering materials are cast iron, steel. We have aluminium, copper, and some alloys of cast iron, sir. There are various alloys of cast iron. So two very important engineering materials are cast iron and steel. Can you tell me the Yes, difference between these two? yes, sir. Sir, cast iron is a brittle material. On the other hand, we have mild steel, which is a ductile material. So cast it has, and we know, sir, ductile materials are good in yield strength and they are good in tension, and brittle materials are poor in tension. Poor in tension. They are good in shear strength. Can you tell me percentage of carbon in cast iron and steel? Yes, sir. Sir, in steel, we have the percentage of carbon is from 0.15% to around 1.5%, whereas in cast iron, it is greater. We have greater percentage of carbon, more than 2%, sir. 2 to 6%, 5.6%. Okay, so you have pen and paper with you, Zubair. Yes, sir. Can you draw a stress strain diagram for cast iron and steel? Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. Okay, इसमें modulus of elasticity किसका ज़्यादा दिख रहा है? Sir, modulus of elasticity, sir, will be greater for cast iron, sir, because it has more elastic range, sir. तो cast iron का modulus of elasticity is more? Yes, sir. Modulus of elasticity. Yes, sir. Modulus of elasticity is basically the slope of. No, sir. It will be more for mild steel. Sorry, sir. Because slope of it is the slope of stress strain diagram up to proportional limit, up to elastic limit. So, sir, we can see the slope is greater for mild steel. So modulus of elasticity will be more for mild steel. आपको पता है कि ज़्यादा होता है या you are just speculating? Sir, I know the value of cast iron is around 200 to 210 gigapascal, but sir, I'm not sure about cast iron. So by the, sir, graph, sir, I am concluding that it may be greater for mild steel. अच्छा ये बताइए cast iron brittle है या ductile material है? Cast iron is a brittle material, sir. How do you define brittle material on stress strain diagram? So, on stress strain diagrams, sir, they exhibit a sudden fracture, sir. We don't see a yield strength, yield points are on the stress strain diagram of a brittle material. ओके, स्टील को कैसे क्लासिफाई करते हैं आप? कितने तरह का स्टील होता है? तो स्टील मेनली, सर, सबसे पहले, सर, लो कार्बन स्टील होता है, सर, जिसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, सर, जिसका परसेंटेज होता है, सर, 0.15 से लेकर 0.15 से लेकर, सर, not sure, sir, about the percentage. I'm not able to recall. And then we have, sir, medium carbon steel. Then we have high carbon steel.
अच्छा मेरे को ये बताइए, आप shear force and bending moment diagram क्यों प्लॉट करते हैं? What is the reason? What is the significance? सर शेयर स्ट्रेस डायग्राम सर हम इसलिए प्लॉट करते हैं सर, क्योंकि सर इसमें हमें सर डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं. We get to know about the different points. For example, we have proportional limit, we have upper yield strength, lower yield strength, ultimate tensile strength. So we need these values to design a machine component. We need to know the value of these stresses to design a material, to design a Bending moment diagram में what is the parameter which you will check in bending moment diagram? in bending moment diagram. Yes. Sir, we see, sir, what are the points of maximum bending moment and minimum bending moment. Sir, mainly we are concerned with maximum bending moment, sir, because that will be the point of failure for of a beam. अच्छा, bending equation आप जानते हैं, right? Yes, sir. What are the assumption behind bending equation? Yes. So first assumption is that the material should be elastic, it should be homogeneous, it should be isotropic, and the beam should be initially straight. The अच्छा मेरे को ये बताइए, अगर बीम स्ट्रेट नहीं है, which are plain before bending. Yes, जुबैर, sir. इफ आई गिव यू कर्व्ड बीम Yes, और अगर हम उस पर shear फोर्स लगा दें, yes, sir. तो कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी उसमें? Sir, if the beam is not straight, so there will be complex stresses will be generated in the beam, sir. Complex stresses means? Mm, Both are shear stresses as well as tensile and compressive stresses. नहीं, वो तो आपका स्ट्रेट बीम में भी होता है, so डिफरेंस क्या है? If I give you straight beam and subject it to shear force, now if I give you a curved beam and subject it to Yes, shear sir. force, what will be the difference as far as stress generation is concerned? I'm not sure, sir, what it is. अच्छा मेरे को ये बताइए, आप मोहर सर्कल तो आपने किया होगा, Yes, sir. कितने केसेस में मोहर सर्कल एक डॉट की तरह से बन जाता है? Sir, सबसे पहले, first of all, sir, we get a dot if there is hydrostatic stress acting on a material. So, for example, if there is compressive stress acting on a body in every direction, in that case we will get a dot. हम्म. And sir, another case will be, sir, if there is tensile stress acting on in every direction on a body, sir. In that case as well, but we will get the dot on a positive axis. अच्छा, आपको अगर मैं एक फुटबॉल दे दूं, Yes, sir. इसमें एयर भरा हुआ है, Yes, sir. फुटबॉल की उसमें जो बॉडी है, उसमें वॉल में कौन Yes, sir. कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी, और उसका मोहर सर्कल बना के दिखाइए. The football is a symmetrical body, sir. It is a spherical body, sir. So there will be only one principal stress developing in the football, which will be, sir, hoop stress, circumferential stress. So, sir, uh, sir, it will be, sir, in all the directions it will be same, sir. So it will be a point, sir. It will generate a tensile strength. So it will on a Mohr circle it will look like a point. और अगर मैं एलपीजी सिलेंडर दे दूं, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी? Sir, in LPG stress, there are longitudinal stresses as well in addition to hoop stresses or circumferential stresses. उसका मोहर सर्कल बना सकते हैं एलपीजी Yeah. सिलेंडर? Yes, yes, sure, sir.
ओके, अब इसका 3 डायमेंशनल बनाइए। यस सर। सर ओके, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रेस बनाइए। 3 डायमेंशनल। श्योर सर। It will look like somewhat like this. अब इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ कितनी जनरेट होगी? Sir, maximum stress, sir, it depends. If you are talking about, there will be, sir, in plane maximum stress, shear stress, and absolute maximum shear stress. So maximum shear, absolute maximum shear stress will be the radius of the bigger circle, and in plane shear stress will be, sir, will be the radius of will be equal to radius of individual circles, sir. ओके, गुड। तो जुबैर, लेट मी गिव द फीडबैक नाउ। जुबैर देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी आपको मैराथन सुनना पड़ेगा दोबारा। Yes, sir. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बाकी जितने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैराथन है उनको सुन लो, और टेक्निकल Yes, sir. स्नैप जो पड़े हुए हैं पैनल के ऊपर उनको भी सुन लो। Sure, और sir. आपको वहां से काफी आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का, और आपका फ्लो मेंटेन हो जाएगा। जैसे ये मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनके जब हर स्नैप में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको नहीं होगा। जैसे कर्व Yes, sir. में कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, ये क्वेश्चन आपको मिला। तो Yes, sir. आपको ऐसे से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कास्ट आयरन और स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और इनकी Yes, sir. प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका Yes, sir. यील्ड स्ट्रेंथ और इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों कंपेयर करना है, इनमें कार्बन परसेंटेज कंपेयर करना है, स्टील Yes. की कैटेगरीज पता करनी है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूअर्स के, तो उनको गो Yes. थ्रू करो, अपनी कॉपी पे नोट करो कि साहब ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे और मेरे को आंसर नहीं आया। और जैसे Sure, मैंने sir. आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे हर बच्चों से, स्टूडेंट से, हर टेक्निकल स्नैप में दो चार क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे अगर 100 आपने रिवाइज कर लिया, मैराथन 2-3 बार सुन लिया, उसका Okay. टेक्निकल स्नैप पे चले गए, स्नैप में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे तरीका है आप सारे स्वेट को इम्प्रूव करने का। Okay, sir. राइट जुबैर? Okay. Okay, sir. थैंक यू जुबैर। Okay, thank you.